come up with answers. He's given a comprehensive written answer. Maybe he'll take a while to be able to articulate it orally. But I just want to add some things which are very important from the point of view of the First Lady member who's asked this question, and also Shri Jagadambika Pal. Sir, Ministry of Corporate Affairs has taken a lot of steps towards reducing pending cases, and as was mentioned earlier, there was a special drive phase 1 and a special drive phase 2. Special drive phase 1 was in 17, special drive phase 2 has been implemented in 23. Till July of 24, that is this month, 15th, 6,294 applications for withdrawal have been filed before the various courts. Now, specifically on ease of doing business, a lot of steps have been taken, nearly 11 steps which have been given in the written reply. So, nearly 11 steps have been taken which were mentioned worthy, which are being specifically said in the reply. But most importantly, decriminalization of 63 major offences. एक मिनट माननीय सदस्य बैठे बैठे प्रश्नकाल में नहीं बोला जाता है, टिप्पणी नहीं की जाती है, ठीक है ना माननीय मंत्री जी? So 63 offences have been decriminalized, and as a result of which companies today are able to carry on their functions without the worry of compliance. There was a central processing center which has been set up so that specified non-STP e-reforms can also be, e-forms related questions can also be taken up. So the most important part of this is zero fee for incorporation has been brought in for companies with authorized capital of up to 15 lakhs, meaning small companies which have small capitals with which they start their business, there is no fee charged. These are as a matter of ease of doing business, other than simultaneously acting on reducing the pendency in the courts. Therefore, this question which relates to ease of doing business and also reduction of pendency has both sides on which the minister is trying to answer. So the most important question which Sri Jagadambika Pal raised about the SEBI, sir, I want to underline the fact that the reforms which have been brought by the SEBI, particularly in timelines which have been given for settlement of claims, is a remarkable step taken forward, and our markets have also been, and companies have also benefited from it. In fact, we are far ahead of the very many other countries where companies law operate. They are still not able to settle claims within even T+6, T+5 or T+4. We have even come to T+1, which is effectively being run today. So SEBI-related reforms also are coming up with ease of doing business and treating both all stakeholders with great comfort. So this question is a very large, this question pertains to a large area of reforms in companies' matters, both related to pendency reduction and ease of doing business. So the question that was getting answered by our new MOS was actually a larger context on which the written answer is far more comprehensive than what the minister has tried to start answering with. But new ministers will take a bit of while, but for us to listen to them, all of us, I would request all of us to kindly accommodate their attempt to answer. Shri Shashi Tharoor ji. Mr. Speaker, the Honourable Minister has given us a kind of laundry list of initiatives, but she's overlooked a very crucial issue, sir, which is that 67% of the pending litigation cases relating to insolvency have exceeded the 270-day time frame.
precisely because there has been no attention paid to the staffing levels of the NCLAT, sir. For example, all the southern states, all 5 southern states and 2 UTs, we have 1 NCLAT in Chennai. And there, sir, according to a media report, the bench has 1 stenographer who doubles up as PA to the technical member, and the registrar sits in Delhi. Sir, this is a preposterous situation. What I would like to ask the Honourable Minister is, what is she doing, what is the ministry doing about giving some attention to the staffing crisis facing the NCLATs, and in particular for the southern states? Would she be willing to consider a separate NCLAT for a state like Kerala, where our cases are pending for so long, sir? Thank you, Mr. Speaker. माननीय मंत्री जी, Sounds very interesting to say I've given a laundry list, but we have done so many reforms. So we need to list it all. And I appeal to the honourable member to read it so that he can differentiate between a typical laundry list and a list of actions taken for reforming the process. Honourable Member Shashi Tharoor should actually differentiate between a laundry list and the list of reforms undertaken by us. So with that said, sir, and with that said, I quite agree with the Honourable Member. Staffing and filling up the vacancies of NCLT and NCLAT is a challenge which we are trying to meet. We are certainly conducting periodically interviews and also advertising for positions and working with the Supreme Court so that we get the right members to appoint them in the various company law tribunals. Yes, it is the truth that there is only one NCLAT, and that is located in Tamil Nadu. I'm sure for now at least, the southern states would find that it is not located in the north and it is in Chennai, and therefore for now at least, NCLAT in Chennai would serve the purpose. However, I do appreciate that we need to have greater number of appellate tribunals, but this is not something which I can just do. Oh, sir, my mic is off. So it's not only the opposition members' mics which are getting off, even mine is off, if that satisfies you. Sir, but my answer is not complete. NCLT, both NCLT and NCLAT appointments are being taken up seriously by all of us. We are trying to fill it speedily. Let me assure the member that filling up these positions are happening with greater sense of urgency. Question number 5, Srimati Aparajita Sarangi. Question number 5, sir. Honorable मंत्री जी, सदन के पटल पे रखा गया है श्रीमान. माननीय सदस्य, Speaker, sir, promoting libraries is crucial for fostering a culture of lifelong learning. National Mission on Libraries was formulated by the central government in 2014. And the main intention of this particular scheme was to enhance the accessibility to knowledge and resources across India. Since 2014, the year in which this scheme was grounded, till today, we would like to know as to what kind of initiatives have been taken by the Government of India, the Ministry of Culture, to raise awareness among the people regarding the benefits of the scheme, and what is the nature of the community engagement and the community outreach. I would request Honorable Minister Culture to enlighten us. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाज जीवन से जुड़े हुए और व्यक्ति के जो है जीवन में जुड़ी हुई शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालता है. लेकिन हम सब जानते हैं कि लाइब्रेरी एज पर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट का सब्जेक्ट होने के नाते प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को इसके साथ में जोड़ना, लोगों की लाइब्रेरी के साथ में जुड़ाव हो, लोगों का अध्ययन करने की अध्ययनशीलता बढ़े, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जन जागरण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकारों के साथ में है. भारत सरकार नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी के माध्यम से
राज्यों को उनके इस एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए धनराशि और संसाधन मुहैया कराती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि लाइब्रेरीज़ के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ साथ में राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न लाइब्रेरीज़ को स्टेट्स में ग्रांट सप्लीमेंट करके राज्यों के द्वारा किए गए निवेश के अनुरूप ग्रांट सप्लीमेंट करके वो अपने यहाँ पर लाइब्रेरी एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकें, रीडिंग मटेरियल को बढ़ा सकें, इसके लिए समुचित प्रावधान किए गए। और इसके साथ साथ में नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी सेटअप करके, जिस वर्चुअल लाइब्रेरी में हमने लाखों की संख्या में पुस्तकों को उपलब्ध कराया ताकि लोग आज के इस तकनीकी के युग में अधिकतम लोग उसका लाभ उठा सकें। मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यगण जितने भी यहाँ उपस्थित हैं वो सब अपने क्षेत्र में जिस तरह से लाइब्रेरीज़ को, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ को स्ट्रेंथन स्टेट ने किया, भारत सरकार के एफर्ट से किया है, कुछ जगह पर ग्रामीण लाइब्रेरीज़ को भी हमने स्ट्रेंथन किया है, स्टेट लेवल लाइब्रेरीज़ को भी स्ट्रेंथन किया है, उसके बारे में अधिकतम जागरूकता अगर अपने क्षेत्र में बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे तो निश्चित ही उसके माध्यम से हम लाइब्रेरीज़ को क्या तक लोगों को पहुंचाने में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आप सप्लीमेंट Known for its rich cultural heritage with diverse traditional systems of knowledge, I would request Honorable Minister Culture to tell us as to how is the national mission on libraries helping the preservation and dissemination of traditional systems of knowledge? एक नया मेंबर का प्रश्न आ रहा है इसलिए मैंने उसको पूछा लूं, फिर एक साथ जवाब देना। डॉक्टर राजीव भारद्वाज। आदरणीय मंत्री जी का जो वक्तव्य सुना मैंने, क्वेश्चन नंबर 5। आपको प्रश्न नंबर नहीं बोलना, आपको तो प्रश्न पूछना है। आप तो प्रश्न पूछे हैं, नए मेंबर जो होता है ना उसका प्रश्न होता है, उसको पूछते हैं। मुझे अपने लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति मंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के अंतर्गत मेरे लोकसभा क्षेत्र में ये 2 जिलों में विभक्त है, जिला कांगड़ा और चंबा। इसके संदर्भ में मुझे ये पता करना है कि मेरे क्षेत्र में इस लाइब्रेरीज़ कितनी लाइब्रेरीज़ हैं और उनके संदर्भ में कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गई। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि हिमाचल प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र में स्पेसिफिक लोकसभा क्षेत्र में कितनी लाइब्रेरीज़ हैं और उन पर कितना धनराशि मुहैया कराई गई है। नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी राज्य में एक लाइब्रेरी और एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को मॉडल लाइब्रेरी बनाने के लिए जो फंड देती है, उसके अतिरिक्त भी जो छोटी लाइब्रेरीज ग्रामीण स्तर पर बनती है, मैं खुशी के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश ने, जो इतना छोटा प्रदेश है, उसने अपने रूरल लाइब्रेरीज़ को अपग्रेडेशन के लिए लगभग 800 से ज़्यादा लाइब्रेरीज़ को भारत सरकार ने जो है वो धनराशि मुहैया कराई है। माननीय सदस्य ने जो अपने ज़िले के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए जो स्पेसिफिक जानकारी चाहिए, वो स्पेसिफिक जानकारी माननीय सदस्य यदि मेरे कार्यालय से संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। आप ही दे देना उनको। दादा आप नहीं हो तो सदन अच्छा नहीं लगे। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। हाँ, प्रश्नकाल समाप्त। प्रशिक्षण सबको सीखते रहना चाहिए, आप भी बताते रहोगे तो सीखता रहूँगा। प्रशिक्षण सीखना ये नियमित प्रक्रिया है। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री द्वारा आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, both in Hindi and English versions.
Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24 Statistical Appendix.